बसिंग एंड डी बसिंग, जरूरतमंद गरीब लोगों को प्रत्येक के हिसाब से 2 मास्क उपलब्ध कराते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इट स्टार्ट फ्रॉम द हेड टू टो। 100 से 150 तक बना देते हैं मैंने। बार बार यूज कर सकते हो, एक बार फिर इसको धोने से भी ठीक है, ये खराब नहीं होता है कपड़ा में। बाहर जो गरीब डाउन ट्रॉडन है, जो स्लम क्लस्टर्स में रहते हैं, क्योंकि वो महंगे मास्क बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप मीडिया पर्सनल हैं, आप सिक्योरिटी पर्सनल हैं, इफ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस इन दीज टाइम्स, देन यू शुड स्टे सेफ, अवॉइड डिस्टेंस फ्रॉम योर किड्स ऑल्सो इफ पॉसिबल। एंड जैसे ही आप घर में वापस घुसते हैं, आप इमिडिएटली अपने कपड़े बदलिए, उनको धोएं, उनको धूप में सुखाएं, नहा लीजिए अगर पॉसिबल है। I would like to send a message to the public. Please don't be panicky. And the government of India has finalized some guidelines for the testing. Don't go testing without any prescription of the doctor, without going to the doctor. If doctor says that it is required, only then go. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। गौरी एंड वान्या, बच्चा पार्टी क्या कर रही है? हम खेल रहे हैं। तुम्हें डॉल्स ही मिली हैं खेलने के लिए, कुछ और कर लो, पढ़ लो। आपने ही तो कहा कि कोरोना वायरस है तो स्कूल्स भी बंद है और बाहर नहीं खेल सकते, तुम घर पे ही तो खेलेंगे। और मम्मा आपने तो कहा था हमें इंडोर गेम्स खेलनी चाहिए क्योंकि बाहर कोरोना वायरस फैल गया है। तुम दोनों तो अपना आराम से टॉयज से खेल रहे हो, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है पापा की, क्योंकि पापा मुंबई में है ना और वहाँ भी कोरोना वायरस है, पता नहीं अकेले कैसे मैनेज कर रहे होंगे। मम्मा अब पापा की टेंशन मत लो। क्यों? वो वहाँ सेफ है जैसे हम यहाँ सेफ है। हाँ, बच्चा पार्टी, पापा की वीडियो कॉल। हेलो हेलो पापा। हेलो, और सब कैसे हो? सही है, हम लोग ठीक है, आप सेफ हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल भी रख रहा हूँ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर योरसेल्फ। नहीं, हम लोग घर पे हैं, मैंने इन दोनों को बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया, घर पे खेल रहे हैं, टॉय सारे सैनिटाइज हैं, बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं और यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन है, आप अपना ध्यान रखो, आप भी बाहर मत निकलना। ओके ग्रेट, टेक केयर। टेक केयर, सेफ हैं और घर पे ही हैं और आप लोग भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और घर से काम करें।
Active COVID-19 cases across India rise to 7,367 with 273 fatalities and 716 people discharged. Government focuses on increasing testing facilities, says no need to panic as government is planning things so as to effectively manage situation. Home Ministry asserts situation regarding availability of essential commodities is under control. Several ministries work in coordination with state governments to resolve logistics problems. Government provides 85 lakh LPG cylinders in 11 days to Ujjwala beneficiaries under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Delivery personnel work tirelessly to provide 50 to 60 lakh cylinders daily. Union Food Minister says there is enough food grain to cater to entire nation. Asserts black marketeers will be dealt with strictly, thanks railways for ensuring supply of 30 lakh metric tons of food grain through 1,056 rail racks. COVID-19 cases across the world continue to spiral. 17.8 lakh cases registered globally with 1.9 lakh deaths. UK PM Boris Johnson makes good progress while US reports 2,000 deaths in a single day. And world celebrates Easter amid coronavirus fear. President, Vice President and Prime Minister extend greetings. PM Modi prays for added strength to successfully overcome COVID-19 and create a healthier planet. Hello and welcome to this edition of the news. I'm Rukma with you. In daily briefing related to COVID-19, the Joint Secretary of the Health Ministry, Love Agarwal, said that a total of 1,86,906 samples have been tested so far, of which 8,356 have been found positive for COVID-19. In the past 5 days, on average, 15,747 samples were tested per day, and 584 of those were found positive per day. He said Health Ministry is extra prepared in case of exponential rise in COVID-19 cases, and there is no need to panic as the government is planning things so as to manage the situation. आज की तारीख में हमारे पास मान लीजिए 8,356 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इसमें से करीब 20% केसेस जो होंगे वो कि मॉडरेट सिम्टम्स या जिनको आईसीयू सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अगर हम उसके हिसाब से इसका विभाग करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे को 1,671 ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सपोर्ट या क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। तो यह फिगर मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि ताकि हम समझें कहीं पर कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो, कहीं पर प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि गवर्नमेंट इज अवेयर, गवर्नमेंट इज प्लानिंग इट्स थिंग्स in being over prepared so as to manage the situation. Active COVID-19 cases across India have risen to 7,367 with 273 fatalities and 716 people discharged after treatment. In the daily briefing, Joint Secretary of the Union Health Ministry, Love Agarwal, gave data for the day, and he said, we are working for door-to-door delivery of essential commodities. Curfew, right. Well, as I repeat, we are working for door-to-door delivery of essential commodities. Curfew passes for suppliers of essential goods will be issued. Against CyberDose, a portal to tackle cybercrime. And 219 testing facilities, 151 labs in the government sector and 68 in the private sector
to be established. And ICMR says 1,86,916 samples have tested so far. Average number per day 15,577. The Health Ministry says 14 institutes have been identified for training people. Again, the Health Ministry has issued that positive cases number 8,356. The death toll reported is 273. The Health Ministry says 34 deaths have been reported during the day. The death toll has risen to 273. Again, the Health Ministry says 716 positive cases have recovered. 80% cases are mild and asymptomatic and are treated at COVID care centers. Further, the Health Ministry says the government is prepared to tackle the issue, and 1,05,000 beds are available for COVID patients. Number of hospitals and isolation beds are increasing every day, says the ministry, and also that 500 beds dedicated at Safdarjung for COVID-19. Also, 444 additional ventilators are being provided for Andhra Pradesh. And the Health Ministry also has added that 1,200 beds dedicated hospital in Ahmedabad is being prepared for COVID cases. And Health Ministry also says Apollo and Max hospitals have made arrangements for patients. Also, social distancing, says the ministry, is a very important component. The ICMR has said 40+ vaccines are under development. 20,000 train coaches to be transformed into isolation wards. Also, the ministry says we are in this together and are fighting it together. Also, we are reacting in accordance with the developments in the issue. COVID-19 is caused by the novel SARS coronavirus 2. A large number of the infected are also recovering despite not getting any specific treatment. This is because of antibodies produced within the body in response to the virus invasion. Efforts are in full swing globally to produce therapeutic antibodies against SARS-CoV-2. की थेरेपी है जो कोविड-19 में कुछ स्टडीज़ ने यूज़ की है और थोड़ा बेनिफिट भी दिखाया है। ये एक नई थेरेपी नहीं है, ये कई दफ़ा यूज़ हुई है। इबोला में भी कुछ हद तक यूज़ हुई थी और कई और इन्फेक्शन में कई वर्षों से ट्राई की गई है। ये थेरेपी में ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स ठीक हो गए हैं वो कैसे ठीक हुए, वो इस तरह से ठीक हुए कि उनकी शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी जो इस वायरस के अगेंस्ट लड़ सकी और वो वायरस को अपने शरीर से निकाल पाए। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये शरीर में रहती हैं, खून में रहती हैं, और जब ये इंसान ठीक हो जाता है तो तब भी ये ब्लड में रहती हैं। और अगर हम उनका टेस्ट करके देखें कि ये एंटीबॉडीज़ हैं और उसको कहीं वो इंसान अपना ब्लड डोनेट करे और उसका हम प्लाज्मा उस ब्लड से निकालें तो उस प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। In India, one such effort is being led by Professor Vijay Chaudhary at the University of Delhi South Campus Center for Innovation in Infectious Disease Research, Education and Training. Professor Chaudhary's group is isolating genes encoding antibodies which can neutralize the SARS-CoV-2. He is using a large antibody library already available in-house as well as a library made from cells of patients who have recovered from COVID-19 infection. These antibody genes will be used to produce recombinant antibodies in the lab, which, if successful in neutralizing the virus, will become a perennial source of antibodies against the virus. अगर किसी पेशेंट को जो कोविड से लड़ रहा है उसको हम यही प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करें तो वो एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में चली जाएंगी और उसके खून में आ जाएंगी और वो एकदम उसके बॉडी को बूस्ट देंगी इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और इस तरह से कन्वालेसेंट प्लाज्मा एक टाइप की ट्रीटमेंट हो सकता है इन पेशेंट्स को इस कोविड से लड़ने के लिए।
And the centre has announced pro-poor initiatives under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana as part of economic response to COVID-19. This is aimed at alleviating the hardships faced by the poor due to economic disruption by coronavirus. As per the scheme, free LPG refills are to be provided to Ujjwala beneficiaries over a period of 3 months from April to June 2020. As on date, oil marketing companies have initiated transfer of 5,606 crore rupees into 7 crore 15 lakh PMUY beneficiary. PM Ujjwala Yojana beneficiary accounts for availing free delivery of LPG cylinder under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Since the lockdown, 50 to 60 lakh cylinders are being delivered daily in the country. When there is nationwide lockdown and the people are staying home to stay safe, LPG delivery boys and all those in the supply chain of LPG are working tirelessly to ensure that clean fuel reaches the people directly at home. Dr. Randeep Guleria, Director AIMS, answers some frequently asked questions regarding COVID-19. The first is on the use of hydroxychloroquine. When and who should use the drug? Let's listen in. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवाई है जो आजकल कोविड-19 में यूज़ की जा रही है। कितनी इफ़ेक्टिव है ये दवाई, इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है। 2 स्टडीज़ हैं, एक फ्रांस से है और एक चाइना से है, जिसने शो किया कि थोड़े से इसका पेशेंट में बेनिफिट हो सकता है। कुछ लैब डेटा भी है और एनिमल डेटा भी है। भारत सरकार ने और हमारी जो एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और जो लोग इन कोविड पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं वो एज प्रोफिलैक्सिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं। ये सिर्फ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस पे है क्योंकि हर एक दवाई का अपना अपना साइड इफेक्ट होता है। बिना डॉक्टर के संपर्क के और बिना इंडिकेशन के इस दवाई को लेंगे तो ये नुकसान भी कर सकती है और इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जब हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं तो एज पर इंडिकेशन ही लें और अगर हम बिना इंडिकेशन के इसको लेंगे तो इससे नुकसान भी हो सकता है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। Dr. Guleria also cleared doubts about how long the virus survives on different surfaces like newspapers. अखबार की जहाँ तक बात है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ वेरी लो। अखबार कंटामिनेट होने के चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि वो कुछ ऐसे एरिया से नहीं आ रहा है जहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा है और उसकी डीलिंग में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आपको तब भी ये लगे कि कहीं ये तो नहीं है तो आप थोड़ा अखबार का जो आउटर पार्ट है, इनर पार्ट नहीं, आउटर पार्ट को थोड़ा सा एंटीसेप्टिक से क्लीन कर सकते हैं। कुछ लोग अखबार को कुछ देर के लिए धूप में रख देते हैं, उससे भी वायरस जो है अगर उसमें है तो वो मर जाता है। अखबार को भी अगर आप टच करते हो तो हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। वायरस आपके नाक तक या मुंह तक अपनी तरफ से नहीं पहुंचेगा, आपका हाथ ही उसको वहां पे लेके जाएगा। And if you're wondering how to decontaminate fruits and vegetables, again, let's listen in. सब्जी और फल में वायरस की सर्वाइवल बहुत कम रहती है। अगर हम उसको अच्छी तरह से धो लें और साबुन के साथ धोने की जरूरत नहीं है, अच्छे पानी से भी धो लें और जैसे मैंने कहा था कि अगर धोने के बाद अपने हाथ हम अच्छी तरह से साबुन से धो लें तो इन्फेक्शन के कोई चांस नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई घबराने वाली इशू नहीं है। और अगर आप सब्जी किसी लिफाफे में लाए हो तो उस लिफाफे को आप अच्छी डिस्कार्ड कर दें, सब्जी उसमें ना रखें, अपने घर के किसी कंटेनर या टिन में ही सब्जी रखें और जो बाहर से लिफाफे में जो सामान आया है उसको एकदम डिस्कार्ड कर दें और डिस्कार्ड करने के बाद फिर से अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। Union Minister for Human Resource Development Ramesh Pokhriyal Nishank has launched a web portal, Yukti, or Young India Combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation Today. It's a unique portal and dashboard to monitor and record the efforts and initiatives of the Ministry of Human Resource Development. The portal will cover various initiatives and efforts of institutions in academics, research, especially related to COVID-19, special initiatives by institutions and measures taken for the betterment of the total well-being of students. It will also allow various institutions to share their strategies for various challenges which are there because of the unprecedented situation of COVID-19 and other future initiatives. In order to ease COVID-19 tests, a drive-through sample collection center has been set up in Haryana's Gurugram.
The initiative was started by Healthians Lab along with the Municipal Corporation of Gurugram. Any person can apply for COVID-19 tests by filling their details online. The facility has been established in collaboration with Healthians Testing Group at Tau Devilal Stadium. One can apply for the test by filling details online. The patient can drive on their own or can be accompanied by another person. It takes about 1 to 2 minutes to collect nasal or throat swabs, and the reports will be published online. It is compulsory for those who want to be tested for COVID-19 to obtain a prescription from a registered medical practitioner. Meanwhile, a sanitation drive launched in Gurugram of Haryana to fight coronavirus. Several areas of the Delhi suburb were sanitized. A COVID-19 cell has been set up in Alapura District Collectorate to monitor quarantine compliance by people and keep a check on their health conditions in real time through interactive voice response system. In the COVID control room here, technology to reach out to a large number of people and provide them medical advice and assistance has been established. Even in the case of community transmission of COVID-19, this cell can operate from remote areas. This district administration is carrying out real-time intersectoral coordination and monitoring in view of the spread of coronavirus. The district collector mentioned that when Pathanamthitta district had 8 active COVID-19 cases, Alapura was able to keep the count at 3. Dr. Sharath Chandra Bose, in charge of COVID control cell in Alapura, said that all the people in isolation are contacted to know about their medical condition using IVR technology. It's not possible to call each and every one of them every day and inquire for the development of symptoms. So we decided to implement the IVR system, the interactive voice response system, through which we can reach out to 10,000 people in maybe 3 or 4 hours, so that we can understand whether any one of them is developing symptoms, and we can take them for testing, and we can treat them and isolate them. In that way, we can contain the disease up to an extent. And in some inspiring news from Kurnool in Andhra Pradesh, an Anganwadi worker helped a pregnant woman in her time of need. Divya Bharati, who was in a helpless state, called Chennamma, a worker at the Anganwadi center in the neighborhood. Here's how it all happened. And in the Kashmir Valley, well, here's a story from the rural areas of the Kashmir Valley, where a campaign has been launched by the army for educating the people. Remote and rural areas, as I already told you, it's a report on the Army's efforts to educate people in remote and rural areas in the fight against coronavirus. As part of the operation Namaste campaign, 53 RR of Army distributed essential food items among migrant workers in Budgam who face problems during the lockdown. And ITBP is conducting yoga classes for evacuees from Italy at the quarantine center at Chavla. All care is being taken to ensure social distancing is practiced. In order to ease out buying for the public during the nationwide lockdown while maintaining social distancing amid the coronavirus outbreak,
Orders have been passed to sell vegetables in Azadpur Mandi in the morning. Fruits will be sold in the evening. Vegetables will now be sold from 6 a.m. to 11 a.m. while fruits will be sold from 2 p.m. to 6 p.m. Orders will be implemented from Monday on. In addition, at least 3 policemen will be deployed in each shift. The joint team of Mandi officials and policemen will have at least 5 officers. And the Pakistan Army again violated ceasefire along the LOC in Kasbah and Kirni sectors of district Poonch today. PRO Defense said that at about 13:40 hours, the Pak Army initiated unprovoked ceasefire violation by firing small arms and intense shelling with mortars along the LOC in Kasbah and Kirni sectors of district Poonch. Alert Indian troops guarding the fence retaliating befittingly. PRO added that there are no reports of loss of any life and damage to any property from our side yet. And the world is celebrating Easter amid coronavirus fears. On the eve of Easter, the Pope Francis celebrated a late-night mass vigil in an empty St. Peter's Basilica. He urged people to not yield to fear and focus on the message of hope amid the pandemic and called for an end to war. The vigil, which normally takes place in a church packed with about 10,000 people, was attended by only about 2 dozen, including a few altar servers and a smaller than usual choir. Pope Francis drew a comparison between the gospel account of the women who found Jesus' tomb empty on the day Christians believe he rose from the dead and the uncertain state of the world today because of the coronavirus pandemic. Prime Minister Narendra Modi extended greetings to the people on Easter. In a tweet, he said, and I quote, "Best wishes to everyone on the occasion of Easter. We remember the noble thoughts of Lord Jesus Christ, especially his unwavering commitment to empowering the poor and needy. May this Easter give us added strength to successfully overcome COVID-19 and create a healthier planet." And that's all we have for you in this edition of the news. Namaskar. We shouldn't mistake this. मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद बढ़कर हुई 8,356। इलाज के बाद 715 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। इस वायरस से अब तक 273 लोगों की हो चुकी है मौत। मरकजी हुकूमत ने निजी शोबे के मुलाजमीन को दी बड़ी राहत। आइंदा 3 माह तक निजी इदारों के मुलाजमीन के EPF की 24% रकम जमा करने का किया ऐलान। जेलों में बंद कैदी कोविड-19 से लड़ रहे डॉक्टरों और महकमे सेहत के मुलाजमों के लिए बना रहे हैं PPE किट और मास्क, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में किया जा रहा है सप्लाई।